Hello and welcome to the online lecture of Profit Prior to Incorporation. This is a topic of corporate accounting. In this topic, we are going to understand how the profit is uh, segregated before incorporation and after incorporation. So, our topic is profit prior to incorporation. In this particular chapter, we are going to segregate the profit before incorporation. That means the company is not yet registered, and we are going to separate the profits and losses. And if it is a loss, then it is a capital loss, and if it is a profit in the pre incorporation, it is called as capital profit. So if it is a loss, we call it as goodwill in the pre incorporation, and if it is a profit, then it is a capital profit. So in the pre incorporation, it is not a normal profit, it is a capital profit. If we are earning profit in the pre-incorporation, that is a capital profit. Today we will solve the question number 5, that is division of gross profit. In this sum, a limited company was incorporated on 1st July 2017. This is a registration date. A company got registered after acquiring a new company, after acquiring a business of another company on 1st Jan 2017. So company acquired on 1st Jan 2017. From 1st Jan till 30th June, because the date of incorporation is 1st July. So up to 30th June, it is a pre-incorporation period. From 1st January to 30th June. So period of 6 months will go in the pre-incorporation. And from July onwards till 31st December 2017, it will be 6 months again. So in this particular topic, we have to calculate two ratios. One is time ratio and second is sales ratio. Time ratio from date of purchase, the date of purchase of business, acquiring another company's business, that is on 1st January 2017 we have acquired. So acquisition of business is on 1st Jan 2017 and the date of incorporation is 1st July 2017. So it is 6 months period. See here, it is 6 months period. And from date of incorporation 1st July till 31st December, it is again 6 months. So we have to write pre and post. 6 months, 6 months. From 1st Jan to 1st July, 6 months. From 1st July to 31st December 2017, 6 months. So 1:1 is the ratio, time ratio. So we have to make a working note, separate working note number 1, time ratio, and we have to calculate the time ratio 1:1 we have already calculated. Now coming to the second part, the following particulars were available. Total sales for the year 2017 was rupees 90,000. That means in the total sales of full year is 90,000. सेल्स सेकेंड पॉइंट में कुछ मिस्टेक है, आपको मैं बताती हूँ. ये शेड पब्लिकेशन का बुक है. सेल्स फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st मई लिखा है यहाँ पर. आपको उसको कट करके 30th जून लिखना है. फ्रॉम 1st जनवरी टू 30th जून द सेल्स इज 30,000. प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स दिया हुआ है 30,000. ये 6 मंथ्स का सेल है 1st जैन टू 31st जून 30th जून. ठीक है, तो आपको अगर 30,000 दिया है तो 90,000 पूरे साल का सेल्स है, फुल ईयर सेल्स. आउट ऑफ 90,000 वी हैव 6 मंथ सेल्स ऑफ 30,000. सो रिमेनिंग 30,000 इज द नेक्स्ट 6 मंथ सेल्स. नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द होल ईयर इज 27,000. Gross profit is total 27,000. Total expenses for 2017 including managing director remuneration is rupees 1,500. Gross profit हम लोग sales ratio से करेंगे. Gross profit is linked to the sales. Sales बढ़ेगा तो हमारा gross profit भी बढ़ेगा. So sales ratio से करेंगे 27,000. अब पहले sales ratio निकालते हैं हम लोग.
सेल्स रेशो निकालने के लिए प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स 30,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल सेल्स दिया हुआ है और इसमें से हम ये माइनस करेंगे। 90,000 में 30,000 माइनस करो प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स, यू विल गेट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स। और आमने सामने रखना है प्री और पोस्ट को, और 1:2 निकाला हमने। 30,000 प्री का इनकॉर्पोरेशन का, प्री इनकॉर्पोरेशन 30,000 सेल, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 60,000 सेल्स, तो 1:2 रेशो आया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इग्नोर द जीरोज एंड राइट द रेशो 1:2। सेल्स रेशो आ गया 1:2। अब यहाँ पे क्या दिया है, टोटल एक्सपेंसेस फॉर 2017 इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 1500 रुपीज 20,000। यानी हमें क्या बोला है, इस 20,000 के अंदर ये अमाउंट इंक्लूडेड है मैनेजिंग डायरेक्टर का। इफ यू नो दीज एक्सपेंसेस आर total expenses are 20,000, so this 20,000, out of this 20,000 we will deduct 1,500 because managing director remuneration, we appoint the managing director after incorporation, so the fees will also come after incorporation only. The rest of the amount after deducting 20,000, after deducting 1,500 from 20,000, we will get 18,500. That amount we are going to pay in the time ratio. We are going to segregate in time ratio 18,500. And 1,500 we have to write it in the only in the post incorporation, because this director is appointed in the post incorporation period. So remuneration will also go after incorporation. कंपनी शेयर कैपिटल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डोंट टेक इट इनटू कंसिडरेशन, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. फाइंड आउट द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, प्रिपेयर द P&L अकाउंट. नाउ वर्किंग नोट 3. In the third working note, we have to write 20,000 minus 1,500. You will get 20,000 minus 1,500 because 1,500 will be directly posted to post incorporation managing director remuneration. 18,500 into half. हाफ कैसे आया, 1:1 रेशो है ना, तो 1 + 1 2 होता है, नीचे डिवाइड बाय 2 करेंगे 1/2, और यहाँ पे भी नेक्स्ट का भी 1 है तो 1/2. 9250 प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. नाउ वी विल मेक द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017. We have to write the year ending date. Income, we are making a vertical statement. First we will write income and gross profit. Only we have gross profit of 27,000. We will do it with a sales ratio because gross profit is linked with the sales. Sales बढ़ेगा तो gross profit भी बढ़ेगा. So we will find out 27,000 का 9,000 कैसे आया. देखिए पहले मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इज इक्वल्स टू 27,000 इंटू सेल्स रेशो. सेल्स रेशो देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्री इनकॉर्पोरेशन का 1:2, तो 1/3 2/3, तो 1/3 9,000. और यहाँ पे ये 18,000 कैसे आया, 27,000 into 2/3. Understood? So the total income is 9,000. I have to highlight it. The total income is the 9,000 and 18,000. Total 27,000 we have segregated in the pre and post.
Why we are segregating? Because we want to know the profit in the pre-incorporation period, because that profit is not used for general purpose. That profit or loss is something different. Capital profit is something different, but here we have capital loss, that is goodwill. Less expenses, other expenses. First we have to deduct 20,000 minus 1500. This 1500 is special expense of managing director, that we will deduct it because it was included, it was given in the adjustment, it is included, so we will minus. included है तो उसको माइनस करेंगे और उसको बाद में सेग्रीगेट करेंगे टाइम रेशो से. 18,500 9250 कैसे आया? 1/2 एंड 1/2. 18,500 का into 1/2 and again 18,500 into 1/2. Managing director, you have to write specific and you have to post it in the post incorporation. Directly post में लिखना है, ये pre में नहीं आता है. Total expenses है 9250 10750. ये साइड में आप देखेंगे कौन सा हाईएस्ट फिगर है, इनकम या एक्सपेंस. जो हाईएस्ट फिगर है आपको टोटल में लिखना है वो, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो आपको लॉस होगा. लॉस को हम लोग कैपिटल लॉस भी बोल सकते हैं, यहाँ गुडविल भी बोल सकते हैं. लॉस इज कॉल्ड एज गुडविल. ओके, यहाँ ये साइड भी हमें इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है, यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमें प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट ऑफ 7250. प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, दिस इज अ नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट. सो रेड में है जो वो लॉस है, लॉस को हम गुडविल बोलते हैं. Thank you very much. I hope you like this video. Please do like and subscribe and share my video. And if you have any doubt, you can ask me personally or you can ask in the comment box. Thank you.